Hey guys, this is channel's host welcomes you all in today's episode. Well, if I speak about opportunity in the stock market, तो आप लोगों को क्या लगता है कि opportunities क्या हो सकता है? Example, buying stocks in cheap prices that when the price increases, we can gain profit. So, जब भी कभी market crash होता है, तब बहुत opportunities create होता है. लेकिन बहुत लोग ये opportunities को miss कर देता है, क्योंकि they think that company डूबने वाला है. लेकिन ऐसा होता नहीं. As it takes long years of hard work for a company to grow, to expand business. Do you guys think कि इतना सालों का मेहनत एक मार्केट क्रैश में खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता. वैसे I faced this. Let me share my experience. In 2020, when there was a pandemic, market fall to very low points, which you can say a market crash. That time I bought a share of a company with rupees 75 each, and today that share price went up to 500 rupees each within a year. So think, what an opportunity. लेकिन बहुत लोग ये मिस कर देता है. So आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि what are the things one should learn from the market crashes. तो चलिए let's begin. So true to say, ये पैंडेमिक लोगों का जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट लाया है. As rising prices of goods, decreasing income, GDP is down, etc. many more. अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो world has noticed many numerous market crashes जो कि इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट किया है. तो ऐसे मार्केट क्रैश में बहुत लोगों ने खूब पैसा कमाया और बहुत लोगों ने पैसा गवाया भी. So seeing this, हमें सीखना चाहिए कि कैसे मार्केट क्रैश फेस करें एंड अपॉर्चुनिटीज को यूज करें. तो एक बात जरूर याद रखना कि जब भी कभी मार्केट क्रैश होता है वे रिकवर करता ही है सूनर और लेटर. सो टुडे वी लर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री एंड टेक ए क्विक लुक एट द पास्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस एंड लर्न सम लेसन्स. सो हियर आर सम हिस्टोरिकल मार्केट क्रैशेस. In 1929, the Great Depression, which was a worldwide economic depression. Second crash we can see in 1946, which was in post-World War II. Third crash 1961 during the Cold War. Fourth crashes on 1968 due to high inflation and the Vietnam War. Fifth crashes in 1973, the end of the Bretton Woods monetary system. Sixth crashes in 1980 due to interest rates hikes and the rise of unemployment. Seventh crashes in 1987 as it is a time for the introduction of a computerized trading. Next crashes on 2000 due to the bursting of the dot-com bubble. Next crashes on 2007 to 2008 as the US housing market collapsed, which caused economic recessions around the world. At present, in 2020, great market crash due to COVID-19. These are the global events which affected the stock market in most countries. I'm telling you all about the global market because our country is dependent in some other countries, so it affects the whole country. However, market always bounced back and investors who weathered the storm earned good returns. तो चलिए 2007 और 2008 का मार्केट क्रैश कैसे रिकवर किया जानते हैं. Year 2007 to 2008, the housing market collapsed in the US and triggered a worldwide economic recession, leading a market crashes in many countries. वैसे इंडिया में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा दूसरे देशों की तरह. आप ये BSE का चार्ट देख सकते हैं before, during and after the market crash of 2007 to 2008. As you can see, in 2008, the Sensex dropped below 9,000 points from the previous high of 20,000 points in 2007. However, as the economy stabilized, market recover होना start हो गया. So in next 5 to 6 years, जो भी investors रहा, उनका investment recover हो गया or they earned good returns. So there were many other factors which played during the recovery period. अब जिन investors ने अपना investment निकाल लिया था in 2008 due to the panic of huge losses, booked heavy losses. क्योंकि पहला बात उन लोगों को मालूम नहीं था कि market crash करेगा. जब किया तब पैनिक हो जाने की वजह से अपना इक्विटीज बेच दिया. तो ऐसे ही as a result they booked huge losses. So what did we learn from this? चलिए देखते हैं. Lesson number 1. Don't be panic and sell your investments. Understand the difference between the national loss and a realized loss. क्योंकि once market crash, bounce back again sooner or later. Lesson number 2. Invest in fundamentally strong securities. क्योंकि market crash का टाइम में बहुत कंपनी रिकवर नहीं करते या कर नहीं पाते क्योंकि their fundamentals are very weak. Lesson number 3. Don't invest quickly and increase risk. Rather research on it. Always follow the Warren Buffett's quote. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. So the lesson number 4 is look at the long term and adjust your portfolio accordingly. क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी मार्केट क्रैश हुआ रिकवर किया ही है, कभी जल्दी तो कभी लेट से ही. So guys, आज के लिए इतना ही. आप लोगों को लगता है कि और भी ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिया in this video, तो कमेंट जरूर करें ताकि everybody should know. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें if you are new to this channel और बेल आइकन का दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही मेरा नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलता रहे सबसे पहले. थैंक यू. दिस इज चैनल होस्ट साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट वीक.